happy. So let's begin with the lesson number 2, that is computer software. So in this chapter we are going to study about introduction to software, second is system software, and the last one is application software. So let's begin. A computer consists of two fundamental components. So fundamental components होते हैं computer में, software and hardware. So software and hardware. So hardware is the body of computer and software is the brain of computer. हार्डवेयर क्या होती है, एक बॉडी होती है कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर आपका ब्रेन होता है कंप्यूटर का. सिंपली पुट, हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स. क्या होता है, जो आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसका कलेक्शन होता है ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज्ड which user can touch, whereas a software is a part of computer that you cannot touch or feel. और सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप ना तो टच कर सकते हो और ना फील कर सकते हो, और हार्डवेयर को you can touch and feel. Now computer software, hardware cannot work in its own and needs instruction. वो अपने हार्डवेयर अपने आप वर्क नहीं कर सकता, उसको instructions की नीड होती है. These instructions are in the form of programs. Like software is a set of programs that tell a computer to perform a specific task. Software एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपको स्पेशल टास्क परफॉर्म करने हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं अलग अलग टाइप के वर्क्स में. These are two types of software, system software and application software. अब चार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software is a software that manages and controls the operation, जो मैनेज करता है कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को and internal working of a computer. It lays the foundation of other application programs. Operating system, language processor and utility software are three types के होते हैं system software. Let us discuss them on one by one. Now do you know a software named BIOS, that is basic input output system, starts automatically start होता है when you switch on a computer. It checks whether all the input and output devices are installed and ready for use. ये check करता है कि जो आपके input और output devices है वो चीज installed है और आपका computer ready है use के लिए. Now operating system, that is OS. An operating system OS is a collection of software that manages computer hardware resources. ये क्या मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और कॉमन सर्विस को प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए. नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वाइटल कंपोनेंट होता है किसका, आपके कंप्यूटर सिस्टम का. ये क्या प्रोग्राम है, दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. सो इट कैसे एक्ट करता है, वो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है आपके यूजर और कंप्यूटर के बीच में. It also controls the execution of all kinds of programs. हर तरीके के programs के execution को control करता है, such as MS Word, WorldPad, Paint, Logo, etc. Operating system can be found in almost every device. हर devices में मिल जाता है, like using computer from cellular phones and video games, consoles to supercomputers and web servers. Some examples of operating systems are Linux हो गया, Android हो गया, Microsoft Windows, etc. Some of the functions of an operating system can be summarized as follows. To control all the input and output device, कंट्रोल करता है आपके सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को. सेकंड इज टू साइन वेरियस टास्क, आपके बहुत सारे टास्क को साइन करता है. कंट्रोल यूनिट, दैट इज CU, एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज ALU, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट रिसीव फ्रॉम द यूजर. नाउ थर्ड इज टू मैनेज मेमोरी, आपकी मेमोरी को मैनेज करता है. इट विल बी एबल टू कैलकुलेट हाउ मच मेमोरी इज नीडेड टू रन अ प्रोग्राम. ये अच्छे से कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी मेमोरी चाहिए हमें एक प्रोग्राम को रन करने के लिए. Now to run any software asked by the user, that is stored on the computer and is compatible with the computer. So हमें कोई भी सॉफ्टवेयर रन करना होता है वो यूजर से पूछता है, मतलब that is stored on the computer and software asks the user, वो यूजर से पूछता है that is stored on the computer and is compatible होता है किसके साथ, आपके कंप्यूटर के साथ. To keep track of all files and folders created, ट्रैक रखता है आपकी सारी फाइल्स और फोल्डर क्रिएट हुए हैं एंड सेव्ड by a user in different locations, जो अलग अलग लोकेशंस पे सेव्ड होती है आपकी फाइल्स. and the user asks for a specific file, it should run that file. जब यूजर को एक स्पेसिफिक फाइल चाहिए होती है आप डालते हो वहां पे, वो आपके लिए वो फाइल को रन कर देता है. To keep track of the files that have been deleted, ये ट्रैक रखता है उन फाइल्स को जो डिलीट हो चुकी है. If a user asks for a file that has already been deleted,
It will display the message that the file does not exist. अगर आपकी फाइल डिलीट हो चुकी है तो आपको एक मैसेज देगा the file does not exist in this system. So it prevents misuse of computer. It prevent करता है misuse of computer by providing options of creating passwords. आपकी creating passwords के options होते हैं आपकी computers में. It manages background services. ये manage करता है background services को without the user being aware of the deeper technicalities. So now language processor. Language processor translates programming language to machine language. ये आपकी programming language को आपकी machine language में translate कर देता है. The different types of language processors are compiler, interpreter, and assembler. So there are of three types: compiler, interpreter, and assembler. So assembler converts assembly language. Assembler क्या करता है? Assembly language को convert कर देता है into machine language. Compiler converts high level language into machine language. High level language को machine language में convert कर देता है. Or translating the program as whole, while the interpreter does the same but translates the program line by line. Programming language like Java, Python and Perl. जो आपकी programming language होती है Java हो गई, Python होगी, Perl होगी, use interpreters. उसको interpreters चाहिए होते हैं. While COBOL, Fortran, C++, etc. use compilers. ये compilers को use करते हैं. Now utility software. Utility software is a computer system software intended to analyze, configure, monitor. Intended होता है analyze करने की, configure करने की, monitors को to or help maintain a computer. Help करता है maintain करने में computer को. It can be included with the operating system. Include होता है आपके operating system से और install separately. Examples of utility software are antivirus, backup software, clipboard, compression, disk and cleaner, etc. Now antivirus software क्या क्या होते हैं? Antivirus software, image of antivirus software. So antivirus software is a computer program. ये आपका computer program होता है that protect the computer from viruses. ये आपके computer को multiple viruses से protect करता है. It has the tools to scan for virus present in the files. ये tools होते हैं जो आपकी files में अगर virus है तो उसको scan कर लेता है and protect the computer from failure of system and losing data. Some antivirus softwares also provide feature. कुछ antivirus softwares आपको क्या provide करता है? Features provide करता है for recovery of lost data. Quick Heal, Kaspersky, and McAfee, etc. are some examples of antivirus software. कुछ examples आपके किसके? Antivirus softwares के. Now backup. In case stored data in a computer suffers loss or damage, backup helps in data recovery. अगर आपका loss हो जाता है, आपका जो data होता है वो loss हो जाता है, फिर damage होता है, तो आपका backup जो होता है help करता है data को recover करने में. It is important. Important होता है to create a backup of the stored data. आपको हमेशा backup create करना चाहिए अपने stored data का in a storage device, as computer can malfunction which can affect its internal hard disk. उसकी internal hard disk को इफेक्ट कर जाता है कभी-कभी, causing loss of data. आपका डेटा खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है. Creating a backup ensures complete recovery. अगर आपका बैकअप होता है तो आपकी सारी complete recovery आ जाती है files in a situation of data loss. Storage devices such as external hard disk, compact disk and flash drives can be used for such purposes. आप storage devices को use कर सकते हैं, flash drive, that is pen drive, CD and external hard disk को यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए. Many online storage facilities are also available. बहुत सारी ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है. Many application programs also offer automatic saving of data for backup purpose. Now compression. So sometimes larger amount of data is needed to be stored. कभी-कभी हमें ज्यादा amount of data चाहिए स्टोर करने के लिए, but the space available is insufficient. जो आपका स्पेस होता है वो insufficient होता है. In this case data can be shrunk. इस टाइम पे आपके डेटा को shrunk कर दो, मतलब छोटा कर देते हैं. This process of shrinking the data so that the more data can be stored in a computer is called compression. जो आपकी shrinking होती है डेटा की, जिससे ज्यादा डेटा स्टोर हो सके उसको क्या कहते हैं? हम compression कहते हैं. Compression is also used when attaching the files for the purpose of sending. कब use होता है? Attach करने के लिए files को, जब purpose होता है sending का, sending them online, as the space provided for attaching data can be limited. Some of the compression softwares are pkzip, 7zip, WinZip, WinAce, WinRAR, etc. Now application software. Application software are set of programs that are developed to carry out specific tasks for user. ये आपके software program होते हैं जो किस लिए develop होते हैं? Carry out करने के लिए specific tasks आपके users के लिए. These specific tasks could be performing
कैलकुलेशन किस लिए यूज होती है, स्पेसिफिक टास्क की कैलकुलेशंस को फॉर्म करने के लिए. We define the documents, arranging of data in a organized manner. आपके organized manner को में डेटा को अरेंज कर देते हैं, ये एनिमेट कर देते हैं पिक्चर्स को, ड्राइंग, लोगोस एक्सेट्रा. Now there are various types of application softwares available such as, बहुत सारे हैं हमारे पास. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. Now first let's talk about word processing software, that is WPS. Word processing software helps you create documents like reports. ये किससे हेल्प करता है, आपकी डॉक्यूमेंट्स जो होता है, रिपोर्ट्स को क्रिएट करने में, लेटर्स, एसेज, टेस्ट पेपर्स, स्टोरीज, आर्टिकल्स, डिटेल अकाउंट्स, एडिटोरियल्स, पोएम्स एक्सेट्रा. यू कैन यूज वर्ड प्रोसेसिंग. WPS को आप यूज कर सकते हो ब्यूटिफाई करने के लिए, अपने टेक्स्ट को पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, एंड इफेक्ट्स डाल सकते हो, इंसर्ट टेबल्स, डायग्राम्स, बॉर्डर्स, प्लेसमेंट्स ऑफ टेक्स्ट, यूज वर्ड आर्ट एंड वेरियस अदर फॉर्मेट्स एज यू रिक्वायर, एज पर योर रिक्वायरमेंट. अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें. Some popular word processing softwares are MS Word, WordPad, WordPerfect, Google Docs, etc. Now, second is database management software, that is DBMS. So, database management software is used to maintain and manage large quantity of data. जब ज़्यादा quantity of data होता है उसको manage करता है. A data is collection of data. A database is a collection of data that is stored in an organized manner. Collection होता है आपके data को जो organized manner में stored होता है. This allows the information to be accessed, modified and updated easily. An example of a database would be your telephone directory. आपकी telephone directory है, उसका database का example where nearly all the telephone users are listed with their numbers. जहाँ पे सारे telephone users के numbers होते हैं, addresses होते हैं. The database management software can easily sort, arrange, add, delete, save, create and update a database as per your requirement or use. Some popular data management softwares are MS Access, DBase, Oracle, MySolve, FoxPro, etc. Now, spreadsheet software. A spreadsheet is an application that represents and analyzes data. ये क्या होता है? ये spreadsheet एक आपकी application होती है जो represent करती है, analyze करती है आपके data को, किसमें tabular में and other forms like charts हो गए, graphs हो गए. Now, spreadsheets are used for calculating and analyze have inbuilt formulas. Inbuilt formulas होते हैं, इसके अंदर already formulas होते हैं. Some formulas that are commonly used in this software: addition, subtraction, division, multiplication, square roots, cube roots, average, maximum, minimum, etc. Some popular spreadsheet software, MS Excel है आपके सबसे ज़्यादा popular है आपकी spreadsheet software, Lotus 123, etc. Lotus 123 is a discontinued spreadsheet. अब ये continue नहीं होती है, program from Lotus software. Now, presentation software, so in which you can present your ideas and thoughts. When an idea or an information is to be created and presented in a creative manner, presentation software are used. आप अपनी office meetings के लिए अपनी आपको कोई अपना idea represent करना है, कोई आपको अपनी कुछ भी PPT represent करनी है अपनी teachers को, या कुछ भी अपने thoughts represent करना है, it is done in the presentation softwares. It is primarily used for educational purpose. किस लिए use होता है? Educational purposes के लिए use होता है. Display करता है आपकी presentation को for commercial projects. Some examples of this software are MS PowerPoint, Canva, Google Slides, Adobe Spark, etc. Now, next is desktop publishing software. This software is specially used for creating visual communication. किस लिए use होता है? Create करने के लिए visual communications को, such as brochures हो गए, आपके business cards हो गए, greeting cards हो गए, books, advertisement, web pages, posters, and more of desktop printing or electronic publishing. Some examples of this software are Adobe Photoshop है, Adobe InDesign है, Quark, Express, CorelDRAW, etc. इस पर आप अपने advertisements बना सकते हो, web pages बना सकते हो, web pages, posters, and many others. Now, do you know software suite is a collection of computer programs. Software suite क्या है? Collection होता है आपके computer programs का. Now, graphics software. Graphics software used to add, create, alter data, delete, save, import, etc. A particular picture, group of picture or graphics. This software can also be used to make cartoon. किससे use होता है? Cartoons बनाने के लिए भी use होता है.
logos, pictures, drawing, etc. Some of the examples of popular graphic softwares are Adobe Photoshop, Corel, Photo Paint, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Paint, etc. Now, multimedia softwares. So, multimedia software is used for adding, creating, altering, deleting, saving and importing a particular animation. Animation के लिए use होता है add करने के लिए, create करने के लिए, alter करने के लिए, delete करने के लिए, save करने के लिए और import करने के लिए. It can also be used to animating a picture, group of pictures, graphics, logos, drawings, cartoons, etc. Examples of multimedia software: Window Media Player, Window Movie Maker, etc. Window Media Player, Window Movie Maker, ये क्या examples है आपके multimedia softwares के. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.